Hello everyone, welcome back to Cogni Solver. So in this video we're gonna continue our Cogni Quiz application which we were making. So I think हमने styling वाला part कर लिया था और theme changing feature भी we have already implemented. Okay. नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जनरेशन. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक डमी क्वेश्चन है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है. अगर मैं आपको दिखाऊं कोड के अंदर तो ये देखो, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है डिव के अंदर. ठीक है, बट इसको हम लोग डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंजेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम आवर क्वेश्चन डॉट जेएस फाइल. ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे करीबन 29-30 क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसको हम लोग डायनामिकली उस डिव में इंजेक्ट कराएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस की जगह पे और ऑप्शंस को ऑप्शंस की जगह पे. करेक्ट. ये क्वेश्चन डॉट जेएस फाइल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है पिछले वीडियोस में. ओके, सो लेट्स डू इट. सो हम अपने जाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में एंड यहाँ पे हमने थीम चेंजिंग वाला कर लिया था, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ करेंगे. हम लोग को कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे. ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं वेरिएबल्स को फट से लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ. ठीक है, बिकॉज मैं लिखने वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. ओके गाइस, सो ये है हमारे वेरिएबल्स. हम लोग को चाहिए जाएंगे क्वेश्चन कंटेनर. अगर आप याद करो, हमने आईडी दी थी क्वेश्चन कंटेनर की, क्वेश्चन कंटेनर एंड स्कोर कंटेनर हम लोग के पास था, स्कोर वैल्यू. ठीक है, उसकी भी हमने आईडी दे रखी थी, स्कोर. फिर अपने पास ये करंट क्वेश्चन कंटेनर, मतलब ये करंट क्वेश्चन एंड टोटल क्वेश्चन. आप अगर देखोगे यूआई में तो ये जो है ना 1/10, तो 1 इज़ अ करंट क्वेश्चन एंड 10 इज़ अ टोटल क्वेश्चन नंबर. ओके, तो उसके लिए ये वेरिएबल है. नेक्स्ट वी हैव टू आंसर बटन्स. ओके, सो यहाँ पे 4 बटन्स आपको दिख रहे होंगे, ये चारों आंसर बटन्स हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल है, इसलिए इसको कराया है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आंसर बटन्स. ओके, एंड देन वी हैव नेक्स्ट बटन एंड स्किप बटन. करेक्ट. सो या नाउ व्हेन वी हैव आवर वेरिएबल्स, तो हम लोग को अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा स्टार्ट गेम. ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा अपने आप. सबसे पहले उस फंक्शन को बना लेते हैं, फंक्शन स्टार्ट गेम. ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करेगा. ठीक है, स्टार्टिंग में. तो सबसे पहले तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा, तो मैं काम करता हूँ, अपना जो हमने सेट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र थीम रखा था बाहर में, ऐसे ही कॉल हो रहा था, इसको मैं उठा के ना इसके अंदर डाल दूंगा. जैसे स्टार्ट गेम कॉल होगा वैसे ये फंक्शन भी अपने आप कॉल हो जाएगा. ठीक है, एंड वी हैव टू कॉल दिस स्टार्ट गेम फंक्शन इनिशियली. ओके, तो अगर आप देखोगे तो हमारा अभी थीम वाला जो फीचर था वो सही काम करेगा. ठीक है, बढ़िया. तो हमने कॉल कर लिया स्टार्ट गेम के अंदर इसको. फिर हम लोग कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे हमने रखेंगे, हालांकि इनकी ज़रूरत हम लोग को अभी नहीं है, बट मैं अभी इनिशियलाइज करके रख देना चाहता हूँ ताकि हमें आसानी हो. ठीक है, हम लोग बोलेंगे स्कोर 0, इनिशियली स्कोर 0 रहना चाहिए. एंड हमें ये चाहिए रहेगा करंट क्वेश्चन इंडेक्स. करंट क्वेश्चन इंडेक्स, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन पे फिलहाल हम लोग हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग को वो जो लिस्ट है क्वेश्चन डॉट जेएस के अंदर, उसको आइटरेट करना है. करेक्ट. एंड हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग पास टोटल क्वेश्चन कंटेनर है, इसका हम लोग कर देंगे इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन क्वेश्चंस डॉट लेंथ. क्वेश्चंस डॉट लेंथ कहाँ से मिलेगी? बेसिकली आप क्वेश्चन डॉट जेएस देखोगे ना, तो इसमें एक वेरिएबल है, ये जो लिस्ट है इसका नाम क्वेश्चंस है. एंड सिंस वी आर इंजेक्टिंग दिस क्वेश्चन डॉट जेएस फाइल इन आवर मेन इंडेक्स फाइल, देन वो वेरिएबल भी हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट द स्कोप ऑफ दिस एप्लीकेशन. करेक्ट. सो वो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में भी अवेलेबल रहेगा. सो हम लोग को ये क्वेश्चंस वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वी कैन यूज इट हेयर एज वेल. सो हम लोग बोलेंगे डॉट लेंथ. ओके गाइस, सो हमने अपना क्वेश्चंस डॉट लेंथ सेट कर दिया है इनर टेक्स्ट के अंदर. एंड लेट्स सी नाउ. सो आप जब देखोगे ये 1/29 दिखाएगा, बिकॉज अपने क्वेश्चन डॉट जेएस में 29 क्वेश्चन है. मैं अगर इस लाइन को कमेंट कर दूँ ना एक बार, तो देखना ये 1/10 दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हमने 1/10 रखा हुआ था. ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, जो इसमें वैल्यूज़ थे ना हार्ड कोडेड वैल्यूज़, उनको हटा देंगे. सी हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रखा था, इसको हटाते हैं, और लास्ट टोटल वाला का 10 रखा था, इसको हटाते हैं. ठीक है, अभी ब्लैंक है. सिंस अभी ब्लैंक है तो ये 1 बाई
या तो हमने स्कोर से 0 हटाया था, स्कोर को फिलहाल रख देता हूँ वैसे ही मैं, ठीक है। और स्टार्टिंग ईयर है 1, तो ये हटा देता हूँ मैं। टाइपो सिर्फ टाइपो ही हो रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे आपको ना ही स्टार्टिंग क्वेश्चन करंट क्वेश्चन दिख रहा है, ना ही टोटल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सो अब मैं इस script.js में इसको अनकमेंट करता हूँ, विच इज व्हाट आई एम डूइंग इन दिस लाइन। जो टोटल क्वेश्चन कंटेनर है उसका जो इनर टेक्स्ट है उसको मैं क्वेश्चंस डॉट लेंथ से सेट कर रहा हूँ। सो अब देखोगे तो टोटल क्वेश्चन कंटेनर आ जाएगा। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन हमने सेट नहीं करा, इसलिए हमें ब्लैंक और हमने कुछ वैल्यू डाला भी नहीं है नॉर्मली ऐसा, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी। करंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, टोटल क्वेश्चन का हमने देख लिया, करंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो विल से करंट क्वेश्चन इंडेक्स, ठीक है, अपने पास ये है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा वैसे हमने इसको 0 कर देना, ठीक है। हमने हालांकि पहले से इसको 0 करके रखा हुआ है, बट हमने पहले यहाँ डिफाइन करा है, यहाँ पे हमने उसको फिर से 0 कर देना, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग स्कोर को 0 कर देंगे। कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगी जैसे स्टार्ट गेम कॉल होगा, ठीक है, पहली बार के लिए। देन नेक्स्ट बटन डॉट डिसेबल्ड ट्रू कर देंगे, ओके। एंड देन नेक्स्ट बटन क्लास लिस्ट, उसमें हम लोग क्लास लिस्ट डालना पड़ेगा, तो नेक्स्ट बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हम लोग क्लास ऐड करेंगे, उस क्लास का नाम रहेगा डिसेबल्ड, ताकि यूज़र क्लिक ना कर पाए उस पर, करेक्ट है। एंड विल से करंट क्वेश्चन काउंट कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट, इसको हम लोग कर देंगे करंट क्वेश्चन इंडेक्स +1 से, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से एरे का, और हम लोग को 0 दिखाएंगे नहीं, हम लोग उसको 1 से दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे 1/29 आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट विल डू स्कोर वैल्यू, विल से इनर टेक्स्ट। तो अगर आप अभी देखोगे तो स्कोर में 0 दिख रहा होगा, हल क्योंकि हमने शायद यहाँ पे 0 डाल कर रखा है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको डायनामिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, फिलहाल आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाके बोलेंगे स्कोर वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू स्कोर, ठीक है। हमें स्कोर 0 डिफाइन करके रखा होगा, करेक्ट, तो ये 0 आ जाएगा। और हम लोग स्कोर को अपडेट भी करते रहेंगे तो अपने आप ये अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ विल मेक अ फंक्शन जो कि हमारे क्वेश्चंस को लोड करेगा, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि उसको स्क्रीन पे दिखाएगा। सो एक बनाते हैं फंक्शन, उसका नाम रखेंगे शो क्वेश्चंस, और मे बी शो क्वेश्चन। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन पास करेंगे, ठीक है, और ये कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा, वो उस क्वेश्चन को लेगा, उसमें से क्वेश्चन वाले पार्ट को अलग करेगा, ऑप्शन वाले पार्ट को अलग करेगा और यूज़र को दिखाएगा। सो विल डू क्वेश्चन कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे क्यू। अच्छा, उसके पहले ना मैं यहाँ से ये जो हार्ड कोडेड क्वेश्चन था इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी यूआई पे देखोगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्यू एंड विल कॉन्कैटिनेट दिस विथ क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे, इसमें से हम लोग क्वेश्चन वाला जो फील्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन कंटेनर में डाल देंगे। अब अगर देखोगे क्वेश्चन लिस्ट के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन फील्ड है, तो इसी फील्ड को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद विल डू आंसर बटन्स, क्योंकि हमने ऑप्शंस भी सेट करने हैं। इनर टेक्स्ट, इनर HTML
हम लोग पहले उसको ब्लैंक कर देंगे बिकॉज हम उसको ओवरराइड करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन ये जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट हम लोग को मिला है उसके अंदर हम लोग आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर एक आंसर्स बोल के लिस्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन के अंदर आंसर्स बोल के एक अलग से लिस्ट है, ठीक है। तो इस आंसर्स है, ठीक है। सो आंसर्स के अंदर हम लोग को आइटरेट करना है, तो विल यूज फॉर ईच लूप, करेक्ट। ओके, सो विल यूज फॉर ईच लूप। यहाँ पे हम लोग को एक एक आंसर मिलता रहेगा एंड विल परफॉर्म सम ऑपरेशंस विद दीज आंसर्स। ओके, हम लोग एक बटन बनाएंगे। अभी आप जो देख रहे होगे यहाँ पे ये चारों बटन्स जो हैं, ये चारों बटन्स आपको हमने एक्चुअली हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे index.html पर हमने 4 बटन्स बनाए हुए, ठीक है। ये बटन्स मैं हटा दूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बटन्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब वो बटन्स हम लोग डायनामिकली जनरेट करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। सो विल से कांस्टेंट, तो फॉर ईच आंसर विल create a button, okay, we'll say document dot create element and we'll say button, okay, and we'll say अभी जो बटन हमने बनाया है इसका इनर टेक्स्ट हो जाएगा ये जो आंसर हम लोग को मिला है इस लिस्ट से उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आंसर के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और ईच ऑब्जेक्ट के पास 2 प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट एंड करेक्ट। सो विल डू व्हाट, विल extract these fields and we'll set it here, correct. So we'll do answer dot text, okay, and we'll add some classes in this button so that it will look cool and what we intended it to look like. So we'll say button dot class list dot add and इसको हम लोग एक बटन क्लास देंगे, btn क्लास, रिमेंबर जो हमने स्टाइलिंग के वक्त इसकी स्टाइलिंग लिखी थी। एंड विल से बटन डॉट डेटा सेट, हमने इसमें डेटा सेट पास करना जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, सही 4 बटन से 4 ऑप्शन के लिए, उन चारों में से कौन सा सही है। तो उसमें हम लोग डेटा सेट पास करेंगे, उस डेटा सेट को बताएंगे कि इसमें करेक्ट बोल के की डालो और उसका वैल्यू होगा आंसर डॉट करेक्ट। आंसर डॉट करेक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो आंसर के पास दो फील्ड्स, एक टेक्स्ट है और एक करेक्ट है। तो टेक्स्ट बताता है कि उस आंसर में मतलब उसमें ऑप्शन क्या है और वो ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो हमने उसको सेट कर देंगे हम लोग अपने बटन में, ठीक है। सो विल से आंसर डॉट करेक्ट एंड देन हम लोग इसके ऊपर एक सारे बटन्स के ऊपर एक इवेंट लिसन करेंगे, क्लिक इवेंट लिसन करेंगे, करेक्ट। सो विल से बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सॉरी button dot add event listener and what kind of event we're gonna listen. Of course we're gonna listen a click event for it, and we'll write an arrow function. Actually we need to call a method inside it, select answer, which is not yet created but we'll create it, and this method will take a answer object and will do its stuffs, okay. After that we'll say answer buttons dot append child this button. So in answer button container will append this child. Now we have to create this method or the function. So for now let's just have it, okay, so that JavaScript won't throw error answer. Okay, so I think our show question method is done. So let's see on the UI. Okay, we can't see anything for now.
because we are not calling this function show question anywhere. Okay, so we need to call this function inside start game function only. So we'll say show question, and this question expects a question object. So we'll say we have that questions array, right, in question.js. We'll use it and we'll pass a index number to it, and that index number gonna be current question index, which is starting from 0. So if you now load, see, we have our question, what is the capital of Australia? But the problem I can see here, we don't have option buttons yet. Need to check what happens. Okay, so we'll inspect. Let's see if there is any errors. Okay, we have a console error. Cannot set property of null set in inner HTML. Okay, let's see what happened to it. It says at show question and start game. So it at show question line number 32. Okay, so at show question method line number 32, this answer buttons, it says cannot set the property of null, means it cannot find answer buttons. But if you see, answer buttons is a property in our index. So let's see, we have answer buttons ID somewhere. Where do we have answer buttons? Okay, we have answer containers. Okay, not answer buttons. So we'll just go here and answer buttons will say answer container. Yeah, now we have our buttons. Okay, so this is how you guys can debug your code. Always remember, don't panic, just inspect it. Let's and see what error it's been thrown here. So we have our question and our option buttons, but on clicking these options nothing is happening. So let's implement the logic for it, so that it will show us which is the correct option or not, just like our existing application. Okay, let's go to our select answer function and we'll write this method now. We'll say we'll make a constant called selected button. We need to know which button has been selected. Okay, selected button, we'll say event dot target, correct, and constant. If it is correct or not, that's also we need to check. Answer dot correct. Okay, now we have to write a kind of a thing where we will take the arrays of that button. We have 4 buttons, right? So we take that array of the buttons, and for each button we'll check the status. What is the status of the button? Okay, status meaning when we were creating that button, we were setting the data set, correct? So if the data set is correct for that button, means this answer dot correct, it comes as false or true. Okay, so if it is true, then we'll set it as green, and if it is false, then we'll set it as red. So that is our check, even that whether the correct option has been chosen or not. Okay, so let's write the code for it, you will understand. And if you are facing any difficulty understanding these JavaScript codes and something else, although I'm trying to explain you in a very layman language, in very granular language, if still there is some doubts, you can always reach out to us in comment section, our social media handles. Okay, so yeah, let's write. So from array class we have a method called from. Okay, so we can pass a list to it. So we'll say answer buttons dot children. Now let me tell you what does it means.
So when I'm writing answer buttons dot children, so if you see answer buttons, here we have this variable answer buttons, which is nothing but answer container, correct? So this answer container, I'm selecting this answer container and I'm saying answer container dot children, means this answer container will have 4 buttons now. Now we can't see here because it's gonna generated dynamically in the browser. So there will be 4 buttons inside it, correct? So I'm selecting all those 4 buttons by this line of code, array.from as and for this from this particular snippet answer button dot children. So now we have got the 4 buttons as a list. So we are passing that that list to this array.from method. Okay, so from here we'll get the list, kind of array we'll get, and then we can iterate over the that array. So we'll say for each button we'll have a arrow function there, and we'll say set status. We'll again need a method which will set the status for the button. If it is true, then it's green. If it is false, then red. So we'll have to create this method set status class, okay, which will take a button element and the data set for and the value, if it is true or false, so which will get from button dot dataset dot correct value, if that is true or false. Okay, so we'll make this method in a few minutes. Let's complete this method first. So we'll say button dot disabled equals to true. Okay, so if a button has been clicked, means the option buttons, if it has been clicked, then this button should be disabled. You cannot click more than once a single button in a single question attempt. Okay, then so that's why I'm saying button dot disable true. So basically I'm disabling this button. Next we are checking for the correctness. Okay, so if correct comes true, so if correct is true, that is how we check true. This correct variable it's either can be true or false, because answer.correct property only can return true or false value. Okay, so if it is false, then this if block won't work. If it is true, then this if block will execute. So if it is true, then we have to increase our score. So I'll say score plus plus. Okay, next we have to set some styling. So we'll say score dot inner. Okay, we have to update the score as well. So we'll say score value. If you see, we have a score value that is nothing but score container. So we'll say score value dot inner text equals to score. So basically we are updating the score. Okay, and then next button dot disabled, we'll say false, because now if that option has been chosen, so now user can click on next button, correct? But before choosing any option, you cannot click on next button. You can skip that question, but you cannot choose for next button. Okay, so we'll disable, we'll say false, and we have to remove the classes from next button to make it enable again. So next button dot class list dot remove disabled. So you have to remove the disabled class from it, correct? Then we have this skip button, and this skip button now will be disabled, because once next button is enabled, you cannot skip that question, because you have already answered this question, correct? So if you have already answered this question, there is no point of skipping this question. That's totally sounds illogical, correct? So that is why you have to disable it and add a disable class to it as well, to depict the user that it is disabled. You cannot click on it. Even if you will click, nothing will happen, correct? Okay, so this comes our answer, select answer thing. Okay, so here we'll check the correctness of the answer. Now also if you click the buttons, nothing will happen.
because we haven't added the things. See, if you see here this button dot add event listener, so each button have now add event list, click event, it's listening, and it's calling the select answer also, but nothing is happening in the window if you see. But if you want to see actually that it is happening or not, I'll do a console, I'll log a statement there, option selected. Okay, so each time I'll click any button, this message will be printed on console. So let's go to console. Okay, so if I click on this button, see option selected, but it will throw an error which will say set status class is not defined, which is why I was telling you that this method set status class, we have to define this method. Okay, so we have to make this method first, then only anything will happen. Whenever you click on button, option selected will be triggered, correct? So that's why that means that our select answer method is working fine. We just now need to implement the set status class method. Okay, so yeah, let's define that method. So we have function and set status class, and obviously it will take an element which we are passing as button and the correct value if it is false or true. Okay, now this will again if we'll check if correct is equals to true. Okay, you can check like this, or we can actually say if correct also, that will work. But now I was trying to show you the variation. Here I said only if correct, and I'm saying if correct equal to true. Basically both are same. Internally it means the same only. Okay, if it will check with the triple equal to sign. Okay, so you can follow any approach. Let's say element dot class list dot add, will add a correct class there so that it will change the color to green, else of course it is going to be red. So we'll say element dot class list dot add wrong. Okay, let's see if it works. Perfect, so it's working, correct? Now next button won't work because we haven't implemented next button functionalities now, and skip button also won't work, and each time only one question will be appearing, that is what is the capital for Australia. So now I've selected Canberra, so it comes as green, and now see my score is 1. But if I select Sydney, my score is 0. So if the point is, if I'm choosing wrong option, so score will be not incremented, and statuses we can see which option is correct and which is false. And if you see, initially next button is disabled, skip button is enabled. If I click on skip, nothing will happen because we haven't implemented the functionality yet. But if I chose any option, then skip button will be disabled and next button will be enabled to click. Okay, I'll do what, I'll keep this video for till here for today, and in the later videos we'll do what, we'll implement the functionality where next button, skip button will also work, and the questions also, it's not only we can see one question. Okay, we can't see skip and next, so this next question will come up. Okay, so all these functionalities we're gonna implement in the upcoming videos, because this video is going too long. Okay, yeah, so I'll keep it here. So that's it for this video. Let's meet in the next one. Till then, keep coding and keep learning.